Don't forget to subscribe the channel to never miss an update. Hello friends, welcome to ChemShastra. So today is our 10th video on solutions और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिगार्डिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का रिलेशनशिप. ठीक है, सो बाय यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, what is a hypertonic solution, what is a hypotonic solution, what is a isotonic solution. अगर ये सब चीज़ आपको नहीं पता, so don't go to this video. First of all, solution 9th वाला जो solutions का 9th वाला lecture 9th वाला वीडियो जो है, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो एक बार देख लेना एंड देन गो अहेड विद दिस वीडियो. So let's begin friends. So आज हम लोग क्या देखेंगे? So for every dilute solution, that's something that you got to understand. For every dilute solution हम लोग भाग रहे हैं, okay, भागना नहीं है, ठीक है. So let's try to understand this concept first. So for every dilute solution, the osmotic pressure follows the equation. तो osmotic pressure का एक equation दिया हुआ है आपके syllabus में, that's a pi is equal to N2R2 RT upon V. That's a basic expression. Now how we arrived at, don't worry, we are going to discuss that as well. आपका जो नया syllabus है, the new textbook, उसमें ये explanation नहीं दिया हुआ है how this equation has been arrived. But if you look at your old syllabus textbook जो था, old textbook, उसमें quite detailed they have explained how this equation has been arrived. And by the way, this equation is also called as a Van 't Hoff equation, Van 't Hoff solution equation. Okay, so इस equation को Van 't Hoff solution equation भी कहा जाता है. Okay, so इसका ये expression क्या है? pi is equal to NTRT upon V, where pi we know is the osmotic pressure का representation. We have seen the formula for the osmotic pressure in the previous video as well. So pi is equal to NTRT upon V, where your pi it represents the osmotic pressure, your V represents the volume of solution in dm cube. Dm cube is nothing but basically liter. ठीक है, so your V is nothing but the volume of solution dm cube. What is your N2? N2 is for N2. What is your N2? It's a number of moles of non-volatile solute. So when you are making a solution, what you are taking into consideration कि अपने solution में क्या क्या है भाई, you are having two stuffs. One is your solute, ठीक है, एक आपका solute है और आपका solvent है. So basically when you talk about the osmosis, when you talk about all this concept that we are studying in the solutions, हम लोग यहाँ पे solvent एक जो solvent है, that is our basically it's a volatile solvent, and what we are taking as a solute is a non-volatile solute. So all these considerations, whatever concept we have seen regarding the freezing point, regarding the boiling point, regarding even osmosis in the previous video, in all that cases we are considering combination of a solution where you are having a solute and solvent, ठीक है, जिसमें से your solute is a non-volatile solute and your solvent is a volatile solvent. Okay, so basically when you talk about N1, one जो representation है that is given for the solvent, and 2 का representation is always followed for a solute. So N1 will be number of moles of solvent, N2 will be number of moles of solute. On the parallel lines, W1 is going to be weight of the solvent, ठीक है, and W2 is going to be the weight of the solute. On the parallel lines, M1 is going to be the molecular weight of the solvent and M2 is going to be molecular weight of the solute. So इसीलिए यहाँ पे N2 क्या, number of moles of non-volatile solute, right? Then R is equal to number of moles है तो उसको यूनिट कुछ नहीं रहेगा, that's a moles. Okay, so R is equal to gas constant. So gas constant का वैल्यू यहाँ पे 0.08206, ये याद रखना पड़ेगा because some of the questions you are going to face in your examination where they are not going to give you the value of R, which is a gas constant, and they will be giving you all the other values. So sometimes it's always better to remember this kind of value. So it's a gas constant value which is a 0.808206 dm cube atmosphere per Kelvin per mole. That's a basic unit of your gas constant value. And as I said, pi is the osmotic pressure for which the unit is atmosphere. As I said, this is also called as a Van 't Hoff general solution equation, which is derived by very two important laws, and that is a Van 't Hoff Boyle's law. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, इट्स डिराइव फ्रॉम टू बेसिक लॉ, दैट इज द वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ एंड द वैन 't Hoff चार्ल्स लॉ. सो ये जो एक्सप्रेशन है आपका वैन 't Hoff जनरल इक्वेशन, दैट इज गेटिंग यू आर गेटिंग दैट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉ. सो वन इज वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ, ठीक है, वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ, एंड अदर वन इज वैन 't Hoff चार्ल्स लॉ. ये प्रीवियस वाले टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था इन डिटेल, ठीक है. सो वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, योर पाई दैट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. दैट इज बेसिकली व्हाट इज योर Van 't Hoff Boyle's law says. Now अभी ये concentration term कहाँ से आया रे? When you're saying number of moles of solute dissolved in volume solution in dm cube, basically you're talking about a molarity, and molarity is nothing but a way of describing the concentration. So यहाँ पे pi is directly proportional to the
C. That means osmotic pressure, sorry, not osmosis, osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solution. Last time अगर आपको याद है हम लोगों ने जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बात किया था, that time I made this statement कि जो अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, what does that mean? The solution having the higher osmotic pressure. ठीक है, हाइपरटोनिक दो सोल्यूशन है, ठीक है, याद है आपको, अगर हमारे पास सपोज 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन है मिक्सिंग विद 0.05 मोलर, ठीक है, शुगर सोल्यूशन है, सो इन दैट केस द वन विच इज हैविंग द हायर कॉन्सेंट्रेशन विल हैव द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा, एंड दिस विल बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन व्हेन यू आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट mixture, the solutions of a two different concentration. So indirectly वहाँ पे भी मैंने एक चीज बोला था, if you are having a higher concentration, that particular solution is going to have the higher osmotic pressure. ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द बॉयल्स लॉ. वैन ऑफ बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? योर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. सो दैट इज टर्म, दिस टर्म इज देयर. सो पाई इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा क्लटर में साफ कर देता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे यार क्या चल रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो जस्ट टू गिव यू आइडिया वंस अगेन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, दैट इज सेड बाय वैन ऑफ Boyle's law. What your Van 't Charles law says, your osmotic pressure is directly proportional to the temperature. That is again information given by your Van 't Charles law. ये दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करोगे तो यू विल गेट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C and T. ठीक है, सो concentration as well as the temperature. What is your basically concentration? I said it's a number of moles of solid divided by volume solution dm cube. So if I simplify this, pi is directly proportional to n2 into v, sorry, n2 into t upon v. If I rearrange this, I will get pi into v is directly proportional to n2 rt, n2 into t. ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखना है यार, अगर आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है pv is equal to nRT. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है, P के जगह पे ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, वॉल्यूम है, सो ऑब्वियसली R इज द थिंग विच इज अ कांस्टेंट दैट यू कैन अप्लाई टू दिस इक्वेशन. So if I'm going to apply the same constant over here, which we already apply in the ideal gas equation, I can make this expression as pi into V is equal to R into N2 into T. If I rearrange this, I'll get pi is equal to N2 RT upon V. ठीक है, so चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, सॉरी बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. योर वैन 't चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मींस एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर योर ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज. ठीक है, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाट योर चार्ल्स लॉ सेज. इफ यू कंबाइन दैट टू यू गेट दिस इक्वेशन. इफ यू गो ऑन सिंप्लीफाइंग इट यू गेट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 into t upon V. यहाँ पे rearrange करता हूँ, I get same equation as that of your ideal gas equation. By comparing these two, I can say that whatever the constant value is there in the ideal gas equation, I can use the same constant value for removing this directly proportional sign. So what is the constant value which is used in ideal gas equation? It's a gas constant value, that's R. So that's why I'm using the same gas constant value over here, and if I rearrange this, what I will get is equal to pi is equal to N2 RT upon V. Simple. Okay, तो साइंस नहीं है. इफ यू नो द आइडियल गैस इक्वेशन, यू नो द ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इक्वेशन विच यू कैन फाइंड आउट, विच यू कैन यूज टू फाइंड आउट द concentration of the solution. ठीक है, moving on to the next part that you need to know is pi is equal to n2 into RT upon V. So as I said, what is the n2 upon V? n2 is nothing but number of moles. मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है भाई? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन डीएम क्यूब. नाउ यू नो ये वॉल्यूम हम लोगों ने वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ही मेंशन किया हुआ है. इफ यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड यू कैन सी V is equal to वॉल्यूम सॉल्यूशन डीएम क्यूब. सो यहाँ पे V is the volume solution in dm cube and n2 is what is number of moles of solute. So that is nothing but the molarity. So I can put over here n2 upon V is equal to molarity. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मोलारिटी डाला मैंने तो n2 into V के जगह पे अगर m डाला, सो pi is equal to m into r into t. ठीक है, that's another expression. So if you know the value of a molarity, okay, you can find out the osmotic pressure. If you know the temperature, obviously gas constant is something that you got to understand, या तो फिर remember कर लो 0.08302. ठीक है, जो भी उसका यूनिट है वो. ठीक है, यूनिट क्या था एक बार देख लेना, डोंट फॉरगेट, दैट्स डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ओके, देन नोट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी. यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलारिटी में एक्सप्रेस किया जाता है, एंड नो नीड टू टेक इट इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी. वाई? बिकॉज योर ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग के वैन 't चार्ल्स लॉ ने क्या बोला? योर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेप्ट. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी बाकी जो चीज रहेंगे उस इक्वेशन में, दैट शुड ऑल्सो बी टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो मोलालिटी क्यों नहीं लेते हम लोग? बिकॉज मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ठीक है,
whereas your molarity is a temperature dependent quantity, and that's the reason when you talk about the osmotic pressure ka relationship with the concentration of the solution, we take that in terms of molarity and not in terms of small m molality. Okay, because molality is what, it's a temperature independent quantity, and your molarity is a temperature dependent quantity. That's why we are taking molarity and not molality. ठीक है, और वैसे भी मोलारिटी का डेफिनेशन कुछ अलग होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं रहता. ठीक है. Okay, moving on to the next part is calculating the molar mass of a solute with the osmotic pressure. How you can do that? So pi is equal to N2 into RT upon V. आपको पता है. What is the N2? It's a number of moles of solute. Number of moles का definition क्या है भाई? Weight divided by molecular weight. So weight divided by molecular weight. Weight किसका रे? Solute का. Molecular weight किसका? Solute का. So W2 upon M2. So in place of this N2, I can substitute the value of W2 upon M2. Once I do that, what I get is pi is equal to, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, so pi is equal to N2 क्या आ जाएगा भाई? W2. ये M2 नीचे चला जाएगा, so M2 into V, और ऊपर क्या है तुम्हारे पास? R into T. That is my first expression. I can rearrange this for molecular weight. So molecular weight of solute में determine कर सकता है if I know the osmotic pressure. ये यहाँ पे कहाँ पे? denominator में. मैं अगर left side में लेके जाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा numerator में. So M2 is equal to, अब ये pi यहाँ पे numerator में, इसको अगर मैं यहाँ पे लेके जाएगा, sorry not यहाँ पे, तो ये कहाँ पे जाएगा? नीचे चला जाएगा. That's in denominator. So M2 is equal to W2 into RT divided by pi into V. So you know the volume of your solution in DMQ, if you know the osmotic pressure, if you know the weight of the solute, R is a gas constant that obviously will be known, you'll be having an idea about it, and T is a temperature. If you know all these parameters, even you can determine the molecular weight of your solute. So by using the concept of osmotic pressure, you are in a position to find out the molecular weight of a solute. ठीक है, तो solute का molecular weight मेरे को पता चल सकता है if I know the osmotic pressure. ये जब मैं सिस्टम सेटअप करूंगा तब. ठीक है, through with this, okay, I repeat this once again because I want you to understand this what I'm saying. ठीक है, अगर नहीं समझा फिर भी तो एक बार वीडियो पीछे जाके देख लेना, अगर फिर भी नहीं समझा तो पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. सो pi इज इक्वल टू N2 into RT upon V. N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन क्या होता है रे बाबा? वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट. तो N किसका है? 2 मतलब सोल्यूट का, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. तो यहाँ पे मैं अगर सब्स्टिट्यूट करेगा, व्हाट आई विल गेट, pi इज इक्वल टू N2 के जगह पे क्या आएगा भाई? W2 अपॉन M2 नीचे चला जाएगा, M2 into V, ऊपर क्या रह जाएगा? R into T. That is the expression for the osmotic pressure. If I know all these values, I can find out the osmotic pressure. ठीक है, अगर मेरे पास M2 नहीं पता, मेरे को osmotic pressure पता है, then I can rearrange this expression to get it as M2 is equal to W2 RT upon pi into V. If I know all this weight of the solute, then gas constant का वैल्यू तो मेरे को पता रहेगा, temperature, osmotic pressure and the volume solution dm cube. I'm in a position to find out the molecular weight of solute. So even if you have the basic idea of this concept or basic idea of this reformulation is to make you understand, you can use a osmotic pressure to find out the molar mass of a solute that you are having in the system, that you are having in the solution. That's it. ठीक है, not a big science. ठीक है, next lecture what we are going to talk about is the reverse osmosis. So by next lecture में reverse osmosis का concept करेंगे और maximum 2 videos and then we will be done with the solutions. ठीक है, few of the subscribers are asking me to take the thermochemistry wala part, which I guess 90% we have covered. Some small part may be remaining, and thermodynamics is something which is core. thermodynamics बचा है अभी भी. So अगर किसी को चाहिए कि thermodynamics ही मैं लूँ तो comment box में डाल देना. Otherwise obviously based on the majority, obviously we works on the majority, but obviously someone has requested, so once I finish with the solutions I will go back to the thermodynamics. ठीक है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूछ सकते हो, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री ही पूछना है. ओके, सो फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स, वंस वी फिनिश द सॉल्यूशंस देन वी विल स्टार्ट विद बूम, एंड दैट्स समथिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. ठीक है, बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर से वी हैव स्टार्टेड विद दिस ऑनलाइन क्लासेस वेयर वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू थ्रू द जर्नी ऑफ 11th 12th IIT JEE NEET and CET preparation, where you are going to we are going to cover physics, chemistry, maths and biology, all your 4 subjects. ठीक है, what are going to be the highlights of the batches that we're going to take? Online classes, as you know, we have to stay home, stay safe. That's the reason online lectures are going to be there. Batch size will be of only 10 students, not more than that. Okay, learn from the best of the faculties. So we have all the top people in their areas, in their subject जो हमारे पास है. They are going to guide you through all the preparation. Feasibility to join for a specific topic. ठीक है, पूरे चैप्टर के लिए नहीं आना, एक टॉपिक. मेरे को HDA पढ़ना है, ठीक है, मेरे को हेलोजन डेल्टास ऑफ एनर्जीज पढ़ना है, मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है,
एनी डैम थिंग। मेरे को नहीं आता, कैन यू टीच अस, वी आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है, ऑब्वियसली इसका कोर्स फीस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द होल स्ट्रक्चर। डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स के लिए आप आ सकते हो। अगेन द ओनली थिंग इज इन दो चीज़ों के लिए आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट वी कैन सेट अप ऑल द लेक्चर्स अकॉर्डिंगली एंड अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर। सो ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानना है, तो ये नंबर पे व्हाट्सएप डाल देना इंस्टेड ऑफ कॉलिंग टू पुट अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस। ठीक है, व्हाट्सएप में आपको ज़्यादा जल्दी रिवर्ट मिल जाएगा, 9967025450। एंड द लास्ट थिंग इज द प्लेटफॉर्म्स वेयर वी आर प्रेजेंट, वेयर यू कैन connect with us, and that's www.facebook.com/ChemShastra. This is an open group, you can join this group. Doubt है डालो, when I'll get a time I will solve it, if I don't have the time somebody from the group will solve। ठीक है, so obviously you are going to have a peer group learning। ठीक है, तो आपको आजू बाजू वाले आपके जैसे बच्चे जो रहेंगे एक दूसरे को आंसर देंगे। ठीक है, सो यू विल अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटर वे। ठीक है, ताकि आप कहीं पे स्टक ना हो। ओके, when obviously and very important things, we are present on YouTube, जहाँ पे आप ये ब्यूटीफुल वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे www.youtube.com/ChemShastra। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, पैसा नहीं जाता ना, वो सिर्फ बटन ही क्लिक करना है। ठीक है, और वहाँ पे कहीं पे तो वो आपको बेल आइकॉन दिखेगा, वो प्रेस करना है, ताकि जब कभी नया वीडियो आए आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मिस नहीं करना है हमें कुछ, बिकॉज अपना वीडियो बहुत कम आता है और जो आता है वो तोहफा आता है। एंड वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, सो www.instagram.com/ChemShastra। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डालते रहता हूँ, कुछ मोटिवेटिंग कोट्स डालते रहता हूँ। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट, दैट इज www.chemshastra.com, वेयर यू कैन गो एंड विजिट the website where you're going to get all the things together. I have written few blogs, तो वो आप देख सकते हो। then there are things like कुछ कुछ टॉपिक्स के हम लोग जहाँ जहाँ नोट्स बना सकते हैं, वो नोट्स वहाँ पे है आपको फ्रीली अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड दैट एंड डू योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल। एंड भाई लाइक ठोको यार, लाइक ठोको, लाइक ठोको, पता चलना चाहिए कि वीडियो पसंद आ रहा है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, बताओ कि केम शास्त्रा में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, वी आर गोना विन द रेस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।